Hello everyone, welcome back to our channel. In today's video, we will discuss about the second important constituent of membrane, that is membrane proteins. Previous कुछ lectures में we discussed about the membrane lipids. Previous lectures में हमने membrane lipids के बारे में देखा था कि membrane lipids क्या होते हैं, कितने types के होते हैं, what is their role in maintaining the membrane structure. In today's video, we will discuss about the second important constituent of membrane, that is membrane protein. So let's start. Membrane proteins. Okay, the last video में हमने देखा था कि membrane किसी भी membrane में any membrane has basically three components. First, lipids. Second, proteins. And third is carbohydrates. Basically, carbohydrate is not the major constituent of all the membranes, but it is a constituent of plasma membrane mainly. It may not be present in all the subcellular membranes. Okay. Okay. So in the previous lectures, we discussed about the membrane lipids. Okay, what are the different type of membrane lipids? What are their examples? In today's video, we will discuss the proteins. ठीक है. तो अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की, हमने देखा था कि मेम्ब्रेन लिपिड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, ग्लीसोफॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स एंड स्टेरॉल्स. तो अगर हम लिपिड्स के फंक्शन की बात करें, लिपिड्स के रोल की बात करें, तो मेम्ब्रेन लिपिड्स जो हैं वो किसी भी मेम्ब्रेन को, बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एनी अदर सबसेलुलर ऑर्गेनल मेम्ब्रेन, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. द बेसिक फ्रेमवर्क और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन इज प्रोवाइडेड बाय द लिपिड्स. ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट द प्रोटीन्स. अब प्रोटीन्स का क्या रोल है? तो ठीक है, जो बेसिक ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी मेम्ब्रेन का, तो दैट इज प्रोवाइडेड बाय द लिपिड्स. दीज आर द लिपिड्स. और ये जो लिपिड है, यही लिपिड बायलेयर बनाते हैं ऑफ द मेम्ब्रेन. The basic structure is provided by the lipids. Okay, so this is the bilayer, lipid bilayer. Okay, now what about the proteins? तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स परफॉर्म मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन्स फंक्शंस. जो भी मेम्ब्रेन के फंक्शंस हैं, स्पेसिफिक टास्क्स हैं, दे आर परफॉर्म बाय द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. दे आर नॉट परफॉर्म बाय द लिपिड्स बट बाय द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. अब वो टास्क क्या है? फॉर एग्जाम्पल, if you talk about the functions, like we know that there are many receptors present on the membrane. So those receptors, for example, if this is a membrane, there is a membrane, and here we have many receptors. Receptors are present intracellularly as well, but अभी membrane की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो membrane पे many receptors are present, and these receptors are basically, these are proteins. Okay, so they serve as membrane protein, they serve as receptors. और क्या? Enzymes, they act as enzymes. Basically we know कि the enzymes are proteins or transport proteins. Transport proteins and so on. तो बेसिक जो फंक्शंस हैं, दे एक्ट एज रिसेप्टर्स. मेम्ब्रेन प्रोटीन दे सर्व एज एंजाइम्स, दे सर्व एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं, एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, और जो भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं आपके मेम्ब्रेन में लोकेटेड, दे ऑल आर प्रोटीन्स. ठीक है. तो दीज आर द फंक्शंस परफॉर्म बाय द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. सो बेसिकली मेम्ब्रेन प्रोटीन्स करते क्या है? जो भी किसी भी मेम्ब्रेन की जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं मेम्ब्रेन की, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. ओके. अब अगर हम सिमेट्री की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो दे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर
asymmetrically distributed. Asymmetrically distributed. व्हाट इज दिस एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन? जैसे हमने लिपिड्स में भी देखा था कि लिपिड्स जो होते हैं दे आर एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, डिफरेंट टाइप के लिपिड्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन एंड इन डिफरेंट टाइप ऑफ लीफलेट्स. सिमिलरली मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी एसिमेट्रिक होता है. इसका मतलब क्या है कि जो टाइप्स होता है डिफरेंट टाइप के प्रोटीन एंड डिफरेंट अमाउंट में प्रोटीन्स जो है वो अलग अलग मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. अब इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं. व्हाट इज दिस एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन? Different types and different amount of lipids are present in different membranes. For example, if we talk about the myelin sheath, myelin membrane, ठीक है, myelin membrane, we all know about the myelin membrane. nerve cell जो होती है आपकी जो उसमें myelin membrane present होती है, myelin sheath present होती है. तो myelin sheath की अगर हम बात करें तो basically it acts as an electrical insulator. ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का काम करती है. ठीक है, दिस माइलिन मेम्ब्रेन. और माइलिन मेम्ब्रेन में अगर हम प्रोटीन के कंटेंट की बात करें तो बेसिकली 25% और इवन यू कैन से लेस देन 25% प्रोटीन ऑफ टोटल मेम्ब्रेन मास. तो अगर माइलिन शीथ की बात करें, माइलिन मेम्ब्रेन, उसमें 25% से भी कम प्रोटीन प्रेजेंट होता है. अगर टोटल मेम्ब्रेन मास की बात करें तो उसमें सिर्फ अप्रॉक्स 25% आर प्रोटीन और इवन लेस देन 25%. अब अगर हम किसी और मेम्ब्रेन की बात करें, फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और द क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन. ठीक है, तो अगर हम इन दोनों ऑर्गेनल्स की अगर मेम्ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे 75 अप्रॉक्स 75% इज प्रोटीन. 75% प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन. अगर हम इन ऑर्गेनल्स की बात करें, इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड क्लोरोप्लास्ट, तो हियर 75%, you can see the difference, 75% here, less than 25%, and that is why we say कि they are asymmetrically distributed. इनका अमाउंट भी वेरी करता है और टाइप्स भी वेरी करता है कि किस टाइप के प्रोटीन विल बी फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन. ओके, सो यहाँ पे ये अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यहाँ का जो प्रोटीन का कंटेंट होता है दैट इज हाफ ऑफ इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में. फॉर एग्जांपल प्रोटीन अकाउंटिंग फॉर हेयर, प्रोटीन अकाउंटिंग फॉर हाफ ऑफ इट्स मास. यहाँ पे मेम्ब्रेन मास का हाफ जो है वो प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है, तो अमाउंट वेरी करता है, टाइप्स भी वेरी करता है. ठीक है, हाईली वेरिएबल होता है. Okay, so this is about some basics about the membrane proteins. अब कुछ एक प्रॉपर्टी और है that is amphipathic nature. ठीक है, ये हमने मेम्ब्रेन लिपिड्स में भी देखा था कि मेम्ब्रेन लिपिड्स जो होते हैं they are basically are of amphipathic nature. तो amphipathic nature का मतलब होता है कि they have both the regions, both the segments hydrophobic as well as hydrophilic. तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं इनमें भी दोनों सेगमेंट्स होते हैं. हाइड्रोफिलिक सेगमेंट हाइड्रोफिलिक रीजन भी होता है और हाइड्रोफोबिक रीजन भी होता है. इसलिए ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी क्या है आपके, स्पेशली इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ये कैसे होते हैं आपके, एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं. नॉट ऑल बट द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. Okay, अब let us discuss one by one what are the peripheral membrane proteins, integral membrane proteins, and lipid anchored membrane proteins. These are the three types of proteins which are present in the membrane. Okay, so look at this diagram.
So in this diagram, all these proteins are present. So this is your membrane. This is the membrane. Okay, this is the exterior side. This is the exterior side, and this is the cytosol. Okay, तो देखिए, this is the integral membrane protein. ये जो प्रोटीन है, this is the integral protein. अब इंटीग्रल प्रोटीन की बात करें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिकली प्रोटीन्स. इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, दैट इज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन. Okay, integral membrane protein. The second one is peripheral membrane protein. Okay, and the third one is lipid linked or lipid anchored membrane protein. Okay, तो देखिए, this is the integral membrane protein. Integral membrane का मतलब क्या होता है? The transmembrane proteins. ठीक है, इनको हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कहते हैं. ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन को ट्रैवर्स करते हैं, स्पैन करते हैं, क्रॉस करते हैं. ठीक है, ये इस तरीके से मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए प्रेजेंट होते हैं, लिपिड बायलर को क्रॉस करते हैं. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स. ठीक है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में हम फर्दर और बात करें तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की 2 और क्लासेस होती हैं. ठीक है, देयर आर 2 classes of integral proteins. The first is single membrane spanning and multiple membrane spanning. So these are the 2 classes of integral membrane protein. So we can understand with the help of this diagram. This is the integral membrane protein which crosses this bilayer. This is the bilayer. और इस bilayer को जो आपका integral membrane protein है, this is the bilayer, lipid bilayer. Okay, so an integral membrane protein crosses this lipid bilayer, and I told you कि they are amphipathic in nature. Integral membrane proteins, they are amphipathic in nature. तो amphipathic कैसे हैं? यहाँ पे ये वाला जो इसका रीजन है and this region both are hydrophilic, और ये जो membrane spanning region है, this region जहाँ पे lipid bilayer को cross कर रहा है, this is hydrophobic in nature क्योंकि lipid bilayer is hydrophobic. So it contains both the region. That is why integral membrane proteins are amphipathic. Okay, so this is the extracellular matrix. This is the extracellular matrix, and these are some other proteins, cytoskeleton, extracellular matrix protein. And अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन से फर्दर कुछ साइटोस्केलेटन की जो आपकी प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन फिलामेंट, दे आर आल्सो एसोसिएटेड विद द हेयर. ये आपके साइटोस्केलेटन के प्रोटीन फिलामेंट्स हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, और ये कहाँ पे होते हैं? आपके साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी कुछ फर्दर दूसरे कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं. Okay, so basically, or peripheral protein. The first, this one is integral membrane protein. This is also an integral membrane protein. अगर हम integral membrane protein की बात करें तो the first property is, the first feature is कि they cross the bilayer. ठीक है, they cross the bilayer, and the second thing is they cross the bilayer. Yeah, they cross the lipid bilayer. The second thing is कि they are non-covalently attached with this lipid bilayer. ठीक है, non-covalently attached होते हैं lipid bilayer से. There are some other proteins जिनका covalent attachment भी होता है. They are called lipid anchored proteins. ठीक है, integral membrane proteins because they cross the bilayer, हम easily इसको membrane से extract नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इसके एक्सट्रैक्शन की एक प्रोसेस होती है कि अगर हम किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या डिटर्जेंट से ट्रीट करें तो हम उन एजेंट्स की हेल्प से इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को मेम्ब्रेन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज द पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. तो पेरिफेरल, दिस इज द पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन. अब पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन को अगर हम देखें तो ये जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी, इस सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, दे डू नॉट क्रॉस द
मेम्ब्रेन, कहीं पे भी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते हैं, स्पैन नहीं करते हैं। अब ये दोनों ही साइड पे प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो ये एक्सटीरियर साइड पे प्रेजेंट होंगे एक्स्ट्रा सेलुलर या एक्सोप्लाज्मिक साइड पे, या फिर ये आपके साइटोसोलिक साइड पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब दोनों ही साइड्स पे प्रेजेंट है, या तो ये प्रोटीन से अटैच होंगे या फिर ये लिपिड बायलेयर से भी अटैच होते हैं, बट प्रेजेंट होंगे ओनली ऑन द पेरिफेरी, ओनली ऑन द सरफेस, ईदर ऑन द एक्सटीरियर साइड और ऑन द साइटोसोलिक साइड। ठीक है, the next one is the lipid anchored protein. So this is the third category, lipid anchored protein. Okay, first is the integral membrane protein, second is the peripheral membrane protein, and third one is the lipid anchored protein. तो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन नॉर्मली जो प्रोटीन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी जो बाकी की दो प्रोटीन्स हैं, ये नॉन कोवेलेंटली अटैच होते हैं, ठीक है, बट ये जो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है ये मेम्ब्रेन से आपके कोवेलेंटली अटैच्ड होते हैं, ठीक है। दीज प्रोटीन्स अटैच्ड इन वाया अ कोवेलेंट अटैचमेंट, ठीक है, एक कोवेलेंटली अटैच्ड होते हैं मेम्ब्रेन से, बट दीज प्रोटीन्स, रिमेंबर वन थिंग कि ये जो कोवेलेंट अटैचमेंट है ये फैटी एसिड चेन के साथ होता है, दिस इज द प्रोटीन। ये प्रोटीन इस बायलेयर को ट्रैवर्स नहीं करता है, ना ही क्रॉस करता है, ये सिर्फ अटैच होता है एक कोवेलेंट अटैचमेंट के थ्रू टू द फैटी एसिड चेन्स, या तो ये एक्सोप्लाज्मिक साइड पे अटैच होगा या फिर साइटोसोलिक साइड पे होगा, ठीक है। तो लिपिड, दीज आर कॉल्ड लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। देयर आर आल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। सबसे मोस्ट कॉमन है आपका जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन्स, वी विल डिस्कस दिस लेटर ऑन। ओके, so basically in this diagram, in a more elaborative way, we will discuss all the proteins. So these are all the proteins, all the different type of proteins and their attachment with the membrane. तो ये सारे आपके proteins हैं, तो let us discuss one by one what are these proteins. So the first one, so this protein I told you recently कि the protein which crosses the lipid bilayer, which spans the lipid bilayer, is called the integral membrane protein, ठीक है। तो this is an integral membrane protein, and an integral membrane protein basically has three domains, ठीक है। तो basically this is integral membrane, और integral membrane protein में भी हमने देखा था कि there are three types, okay। So this is first one, sorry, wait a minute, okay, this is the first one, single membrane spanning. So this is integral membrane protein, integral membrane protein, okay, but this is single membrane spanning. What does it mean? कि ये मेम्ब्रेन को ये प्रोटीन क्रॉस तो करता है बट ओनली सिंगल टाइम, ठीक है, बाय फॉर्मिंग अल्फा हेलिक्स, ठीक है। सो दिस अल्फा हेलिकल रीजन is present in between this membrane. This is the lipid bilayer, ये आपका lipid bilayer है, ठीक है। This is called the single membrane spanning protein because this protein crosses the membrane only single time by forming an alpha helix. Now there are three types of domains present in these proteins. Okay, if we talk about the domains, तो यहाँ पे तीन segments या domains होते हैं। First होता है आपका N terminal domain या N terminal region or segment. The second one is the transmembrane domain or the central domain, transmembrane region or the central region. Okay, and the third one is your C terminal domain or C terminal region. Okay. So अगर हम इस सिंगल मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन की बात करें, so this is the N terminal domain. Amino group is present
So basically on the cytosolic side, the C-terminal domain is present. And so this is the N-terminal, this is the C-terminal of this protein. And the third domain, this is the transmembrane domain. Okay, तो ये तीन डोमेन्स होते हैं आपके, the three domains. अगर हम इस डोमेन की बात करें एन टर्मिनल और सी टर्मिनल की, तो बेसिकली दीज टू डोमेन्स ऑफ प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ they are consisting of polar and charged residues. यहाँ पे जो भी आपके अमीनो एसिड्स होंगे वो पोलर और चार्ज रेसिड्यूज होंगे, ठीक है. हाइड्रोफिलिक होंगे बिकॉज दे आर बोथ द डोमेन्स आर प्रेजेंट ऑन द हाइड्रोफिलिक साइड. अगर हम इस डोमेन की बात करें, द सेंट्रल डोमेन और द ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड्स होंगे आपके वो नॉन पोलर रेसिड्यूज होंगे, हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज होंगे, और उनकी जो साइड चेन्स होंगी वो भी हाइड्रोफोबिक होंगी, ठीक है. तो दीज आर द थ्री डोमेन्स that make a single membrane spaining integral membrane protein. Okay, the next one, the second one. So this is the second one. Okay, let me rub it. So this is also a integral membrane protein, but if you can see, यहाँ पे भी वही तीन regions हैं. This is the N-terminal region, this is the C, and this is the transmembrane region. But the transmembrane region, this protein is crossing the membrane several times. This protein is crossing the membrane only once, इसलिए हम इसको कहते हैं single membrane staining. And यहाँ पे multiple times lipid bilayer को cross कर रहा है, and that is why this is called multiple membrane staining integral membrane protein. This is also integral membrane protein. ये दोनों ही आपके integral membrane proteins हैं. This is single membrane staining, this is multiple membrane staining. ठीक है. यहाँ पे भी आपका एक एन टर्मिनल रीजन होता है on the extracellular side. This is the transmembrane region which is traversing the membrane, the lipid bilayer, and this is the C terminal region which is present on the cytosolic side. And these are alpha helices. So this portion of the protein is nothing but alpha helices made up by this protein. Okay, this is the third category of membrane proteins. ठीक है. तो यहाँ पे this is called, these are also membrane proteins or integral membrane proteins. They are also integral membrane proteins. Okay, the only difference is they are also traversing the membrane, but the transmembrane region is not made up of alpha helices but beta barrels or beta strands. Okay. The transmembrane region of the membrane protein, it can be alpha helices, it can be made up of alpha helices or beta strands or beta barrels. Okay. There is only difference. This is also a transmembrane protein or integral membrane protein. The only difference is कि यहाँ अल्फा हेलिसेस की जगह बीटा स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है. ये जो मेम्ब्रेन स्पेनिंग रीजन है प्रोटीन का वो अल्फा हेलिक्स कंटेन नहीं कर रहा है, अल्फा हेलिक्स फॉर्म नहीं कर रहा है, बट जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया है वो एक बीटा स्ट्रैंड है, ठीक है, या बीटा शीट. ओके, सो दिस इज द थर्ड कैटेगरी. ओके, द नेक्स्ट वन, द फोर्थ वन. दिस इज द फोर्थ कैटेगरी of membrane proteins. यहाँ पे अगर हम देखें तो membrane protein, this is basically a protein which is present on the, this is the cytosolic side. Yeah, this is the cytosol. This protein is present in the cytosol, and by forming an alpha helix, this protein is associated with this leaflet. This is the cytosolic leaflet of the bilayer. By forming an alpha helix, this protein is associated with the cytosolic leaflet of the bilayer. Okay, then another protein. So this is the fifth category. Okay, so this is the fifth category of proteins.
ओके, तो ये जो प्रोटीन है द फिफ्थ वन, दिस वन, दिस प्रोटीन, this is basically a lipid linked protein. Okay, lipid linked protein or lipid anchored protein. So this protein is I told you कि जो lipid anchored protein है, ये आपके ये जो लिपिड बाइलेयर है, जो मेम्ब्रेन है, उसको ट्रैवर्स या क्रॉस नहीं करते हैं. दे आर अटैच टू द फैटी एसिड और सम अदर एंकर्स. कुछ एंकर्स की हेल्प से ये फैटी एसिड चेन से या तो साइटोसोलिक साइड पे या फिर आपके एक्सटीरियर साइड पे, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे ही अटैच होते हैं. तो दे आर लिपिड लिंक प्रोटीन. वी विल फर्दर डिस्कस कि कितने टाइप के आपके लिपिड लिंक प्रोटीन होते हैं. ठीक है, दिस इज ओके. द नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, ये भी एक टाइप की लिपिड एंकर प्रोटीन ही है, जिनको हम कहते हैं जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन्स. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन्स पे आपको प्रीवियस ईयर्स में दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन सीएसआईआर में. तो ये जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन्स बेसिकली क्या है कि दिस इज द प्रोटीन, दिस इज द एन टर्मिनल ऑफ द प्रोटीन एंड दिस इज द सी टर्मिनल ऑफ द प्रोटीन. तो बेसिकली दिस सी टर्मिनल इज अटैच्ड टू अ जीपीआई एंकर. यहाँ पे एक जीपीआई एंकर ये फॉर्म करते हैं. जीपीआई एंकर क्या होता है? जीपीआई एंकर का फुल फॉर्म होता है आपका, एक मिनट, वेट अ मिनट. So basically what is this GPI anchor? This GPI anchor is glycosyl phosphatidyl inositol anchored proteins. ये ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटाइल इनोसिटॉल प्रोटीन्स होते हैं. फॉस्फेटाइल इनोसिटॉल, इफ यू डोंट नो, यू कैन वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स. उसमें हमने डिस्कस किया है कि फॉस्फेटाइल इनोसिटॉल क्या होता है. ठीक है, फॉस्फेटाइल इनोसिटॉल इज अ फॉस्फोलिपिड. प्रीवियस वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं कि फॉस्फेटाइल इनोसिटॉल क्या होता है. ओके, देन यू कम टू दिस वीडियो एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड कि जीपीआई एंकर क्या होता है. अब जीपीआई एंकर में फॉस्फेटाइल इनोसिटॉल मेम्ब्रेन लिपिड है. तो मेम्ब्रेन लिपिड, यहाँ पे आपका ये मेम्ब्रेन लिपिड, फॉर एग्जांपल ये एक मेम्ब्रेन लिपिड है. ठीक है, अब इस मेम्ब्रेन लिपिड से आपका एक ये जो जीपीआई एंकर है, यहाँ कुछ ग्लाइकोसाइल मतलब कुछ कार्बोहाइड्रेट शुगर रेसिड्यूज होंगे. फॉर एग्जांपल इसमें आपका ग्लूकोसामिन होगा, मैनोज होगा. ठीक है, और भी कुछ इसमें रेसिड्यूज अटैच होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका एक इथेनॉलमीन फॉस्फेट होता है, ईपीपी. फिर उससे मैनोज रेसिड्यूज अटैच होते हैं, फिर उससे ग्लूकोसामिन अटैच होता है. इस तरीके से एक जीपीआई एंकर बनाते हैं. वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो दिस जीपीआई एंकर प्रोटीन. ठीक है, क्योंकि इसमें काफी थोड़ा सा लेंदी है. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक निटी-ग्रिटीज कि कैसे जीपीआई एंकर फॉर्म होता है. तो एक जीपीआई एंकर की हेल्प से ये जो प्रोटीन है ये आपके मेम्ब्रेन में प्रेजेंट फैटी एसिड से ये अटैच होता है. ठीक है, लिपिड एंकर प्रोटीन है. और ये जो प्रोटीन्स है, अनलाइक अदर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये कोवेलेंट अटैचमेंट फॉर्म करते हैं. नॉर्मली अदर प्रोटीन्स आर नॉन कोवेलेंटली अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन, दे आर कोवेलेंटली अटैच्ड. ठीक है, तो दिस एंड दिस वन, lipid linked proteins. Okay, next one. So this is the sixth one, GPI anchored protein. Okay, the last one, seventh. Okay, so these protein, it is very clear कि ये जो proteins हैं आपके, they are present. This one is present on the extracellular side. This one is present on the cytosolic side. और ये सिर्फ periphery पे present है. They are not crossing this membrane in any way. ठीक है, ये आपके क्या है? ये आपके integral membrane proteins हैं. These are integral membrane proteins. Okay, and these two are peripheral membrane proteins. So they are attached to the periphery through weak interaction, non-covalent interaction like electrostatic interaction and hydrogen bonding, and they can be easily dissociated. We can extract them readily from the membrane by treating the membrane with some solutions with a high ionic strength or high pH. Okay, so they can be dissociated, extracted readily, but not the integral membrane proteins. Integral membrane proteins को हम directly easily extract नहीं कर सकते हैं membrane के साथ. ठीक है, so I think it will be clear कि these are the membrane protein, कैसे वो attach होते हैं membrane से. Single membrane staining, multiple membrane staining. The membrane protein, this is also an integral membrane protein, but it is not forming the alpha helix but beta sheets in the membrane. Okay, so these two are lipid linked protein, and these two are the
peripheral membrane proteins. This is all about the gist of all the membrane proteins. Okay. So there is one example. कुछ examples हम ले लेते हैं. For example, पहले about the integral membrane proteins. Integral membrane proteins. So basically these are of two types: single membrane spanning and multiple membrane spanning. Okay, we can take some examples. For example, सबसे common example is the glycophorin, and multiple membrane spanning में you can see many examples like GPCRs, G protein coupled receptor, where there is one more anion exchange band 3 protein. Okay, anion exchange band 3 protein. कुछ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऐसे होते हैं आपके, जैसे फॉर एग्जांपल पोरिन प्रोटीन्स. ओके, तो हम पोरिन प्रोटीन को बेसिकली ये है एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन ही, बट जैसे हमने देखा कि कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन अल्फा हेलिसेस फॉर्म नहीं करते हैं, बट जब वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं तो दे फॉर्म बीटा स्ट्रैंड्स और बीटा शीट. तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ दोस टाइप ऑफ प्रोटीन इज द पोरिन प्रोटीन. ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल्स. ओके, एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं. दिस इज basically a single membrane spanning protein. एक more elaborate diagram की help से we can understand कि this is the N terminal that we have talked कि there are three domains. इसमें से ये आपका N terminal domain है. ठीक है, so this is the N terminal domain, and basically this is the transmembrane domain, and this is the cytosolic domain. ठीक है, so this is membrane spanning helices. ये क्या है आपके अल्फा हेलिक्स. दिस प्रोटीन, अब यू कैन टेल कि किस टाइप का प्रोटीन है. दिस इज अ सिंगल मेम्ब्रेन स्पेनिंग प्रोटीन. ठीक है, दिस इज द अल्फा हेलिक्स विच इज present in the membrane spanning region of the protein. This is the extracellular domain and this is the cytosolic domain. Okay, these three domains are present in any integral membrane protein. Okay. So next is multiple membrane spanning protein. अगर हम मल्टीपल मेम्ब्रेन स्पेनिंग प्रोटीन्स की बात करें, so let me draw a simple structure of a multiple membrane spanning protein. Okay, how does it look like?
So this is a multiple membrane spanning protein. ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है. फॉर एग्जांपल दिस इज जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. देयर आर मेनी एग्जांपल्स. जैसे हमने देखा एनायन एक्सचेंज बैंड 3 प्रोटीन भी होता है. तो इसमें जीपीसीआर में 7 अल्फा हेलाइसिस आर प्रेजेंट, 7 alpha helices. Okay, so what is this 7 alpha helices? This GPCR, which is a multiple membrane spanning protein. So I told you कि multiple membrane spanning proteins ये multiple times membrane को span करते हैं या cross करते हैं. यहाँ पे इस प्रोटीन ने कितने टाइम्स क्रॉस किया है? 7 टाइम. 1 2 3 4 5 6 7. 7 टाइम्स by forming the alpha helix this protein is crossing the membrane. ठीक है, इसमें 7 अल्फा हेलिसेस. ये भी क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ लेता है कि जीपीसीआर में कितने मेम्ब्रेन स्पेनिंग हेलिसेस होते हैं, या ग्लाइकोपोरिन जैसे हमने देखा उसमें एक होता है. पार्ट बी में कई बार इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि इसमें कितने अल्फा हेलिसेस प्रेजेंट होते हैं. तो जीपीसीआर में होते हैं 7, ग्लाइकोपोरिन में होता है आपका 1. जैसे एनायन एक्सचेंज बैंड 3 प्रोटीन है, उसमें 14 टाइम्स जो प्रोटीन है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, तो उसमें 14 मेम्ब्रेन स्पेनिंग अल्फा हेलिसेस होते हैं. कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो आपकी अल्फा हेलिक्स के थ्रू मेम्ब्रेन को स्पैन नहीं करते हैं, बट बीटा स्ट्रैंड्स या बीटा शीट्स के थ्रू क्रॉस करते हैं. वो बैरल शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे हमने पोरिन प्रोटीन का देखा. तो उसी की वजह से पोरिन प्रोटीन, द नेम इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग, जैसे हमने देखा यहाँ पे कि ये बीटा स्ट्रैंड्स हैं, ये बैरल शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये पोर्स बनाते हैं मेम्ब्रेन में. ठीक है, जैसे इसलिए नाम दिया हमने. इसका एग्जाम्पल क्या लिया था? पोरिन प्रोटीन. ठीक है, तो बीटा बैरल्स की वजह से पोर्स वहां पे बनते हैं. एक एग्जाम्पल है आपका बैक्टीरियो रोडोप्सिन. बैक्टीरियो रोडोप्सिन भी आपका मल्टीपल मेम्ब्रेन स्पेनिंग प्रोटीन का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद रखना है बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट. प्रीवियस ईयर्स में CSIR ने कई बार पूछा हुआ है. ठीक है, तो दिस इज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन. अगर हम डोमेन्स की बात करें जो आपके सिंगल मेम्ब्रेन स्पेनिंग में थे, वही यहाँ पे भी एक आपका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, ये आपका साइटोसोलिक डोमेन है. ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक लूप्स के थ्रू ये सारे, ये हाइड्रोफिलिक लूप्स हैं जो ये इनसे से अटैच है, ये हाइड्रोफिलिक लूप्स हैं. ये आपका ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है, और ये क्या है आपका? लिपिड बाइलेयर इज द मेम्ब्रेन. तो इस तरीके से मेम्ब्रेन में मल्टीपल टाइम्स क्रॉस करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द membrane proteins. Okay, in the next lectures we will discuss about the another important constituent of the membrane, that is carbohydrates. So thanks for watching. Subscribe to our channel for the regular updates.